means opinion. But my opinion has got no value. Since we believe in freedom of speech, every individual has a right to his opinion, including me, including you, brother. You can, like Kushwant Singh offers her his home, he has a right to his opinion. I can't object. But I can't sentence her. Only a qazi has a right to give judgment and the verdict. There's a world of a difference between fatwa and a verdict. Fatwa, I'd like to give the example, like suppose a lawyer, he gives his opinion to the judge, but the judge can differ from the lawyer. The fatwa need not be a judgment. Let me remind you that, brother. Even I may be an expert, which I'm not, I as a doctor cannot give a fatwa on Islam. Fatwa, in my personal opinion, yes, as an individual, but not as a scholar, neither as a judge, because I'm not a judge. Regarding your one summarized question, that can, and if I've forgotten the question, you can repeat, brother, that can the same crime have different punishments, or can different centers be set up for punishment? Correct, brother? Can you repeat the question, brother? For example, that's right. For example, in India, there are courts of law which are set up to decide whether a crime has been committed, if committed according to the law of the land, what punishment is proper. In your view, whether in India or in Bangladesh or anywhere else, I mean, what is the state which can give authorities, the judiciary? Can there be other centers of brother asking me that can they disturb the centers of giving judgment in India first, then I come to Bangladesh. I'm sorry, again he has misunderstood the Islamic law. In India, the Muslim Personal Law Board can only give judgment on personal issues like divorce, like marriage, like inheritance. They cannot pass their law on criminal cases because we have a common criminal law in India. So the question is basic. Regarding Bangladesh, I don't know, again, don't think I'm trying to avoid the question. Again, I don't know how many boards or how many courts of law are there in Bangladesh. But if you talk of Islam in the previous ages, there was something like Khilafat, there was a Khalifa, and he was the head. There may be small courts, like how we have a problem in the low court, you go to a high court. If you have a problem in the high court, you go to Supreme Court. So there, the Khilafat, the main court was him. He was the Khalifa, he appoints the main chief judge, like how we have Supreme Court. If there are any small courts falters, you can go to the chief one. But today, the Khilafat has been abolished. But maybe countries may be having their own way of low court, high court, Supreme Court. We have to analyze the history of the country. Hope that answers the question, brother. It may be a new question, but I hope your permission just ask one question, that you cannot be confused about one issue, that some Maulana, however highly respected he may be, has not been made a judge or a small court or a high court or a Supreme Court in the country of Bangladesh. Does he have a right to give a public call for the head of Tasliman and Ashray? If you had heard my answer correctly, with attention, you would have got the answer. I said everyone, including you and I, have the right to give fatwa. Fatwa means opinion. Please let me complete. He gave a fatwa. His opinion was that he called for the head of Tasliman Nasreen. So you defend that. Everybody who kills Tasliman Nasreen will get back. That's right. Now 50,000 takas has just come now. First, your question did not include that. I answer to that. Please let me answer, brother, and I give you an opportunity with the permission of the chair. Does anyone have the right to call for anyone's head, even if it be a fatwa or opinion? Even while giving opinion, you cannot slander anyone, neither can you abuse anyone. If it's an Islamic country, a person, Tasliman Nasreen, can sue that Maulana, saying that he... Please let me complete, sister. See, I'm not interrupting your questions, so if you please do not interrupt my answer, it will be better. I'm just giving a general opinion of Islam. Please, sister, if you allow me. She has a right if it's an Islamic country. I don't know how far is Bangladesh an Islamic country, how far are they following the laws of Islam, I don't know. Maybe they are following, maybe not following. So she has a right, if she thinks that the death sentence put on her head is wrong, she has a right to take him to an Islamic court, if there is one, and sue. But let me link your answer with the comments laid down by the learned speaker, Father Pereira.
he made a comment that it is very easy to frame anyone in the blasphemous law and sentence that person to death. Or taking the example of Taslima Nasreen, that it is not very easy, as easy Father Pereira has said, because if you produce a witness in the court of law, if the crime is a small crime, 2 witnesses required. If the crime is great, 4 witnesses. And if any of those 4 witnesses falter, believe me, if any of those 4 witnesses falter during cross-examination, all 4 of them receive 80 lashes each. 80 lashes. It's not that easy. It's not as easy as we take an oath in the court of Indian government. मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, and then you can lie. It's not that easy. You receive 80 lashes each, and believe me, it's very difficult to bear those lashes. It's not as easy as Father Pereira has made it sound. Hope that answers the question, brother. Yes. No, I think we should. Dr. Naik, साजिद रशीद उर्दू टाइम्स। हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर बहुत सारे फिरके के, बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं और उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने लोगों को सजा देने का अपना एक मयार मुकर्रर किया है। ऐसे देश में रहते हुए क्या आप किसी को किसी भी किस्म की तज़हीक कुरान की मजम्मत के लिए या उसकी गलत कहने के लिए क्या आप वो इस्लामी सजाएं तजवीज़ करेंगे जो इस्लाम में कही गई है, और क्या वो यहाँ पर इस मुल्क में जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो सही हो सकती है? Brother has again asked a similar sort of question, that since we have different religions, can every religion follow their own law? Or suppose if anyone has abused the Quran, can you follow the Islamic law? Again, brother, let me clarify. Wherever the criminal law is in any country, you take whether Saudi Arabia, whether Iran, whether Pakistan, whether America, whether England, whether India, the criminal law has to be common. The civil law can change. The civil law can change. The criminal law in Saudi Arabia is same whether Muslim or non-Muslim. In India, the criminal law is same whether Muslim or non-Muslim. So you cannot have a different criminal law. You can give your comments, but you can give your opinion whether that person should be given punishment of 1 year, 2 years of death sentence, whatever it is, but you can't practice it, because you have to practice a common criminal law. If it's an Islamic state, then you have to abide by the Quran. You cannot deviate from the Quran. But since India is not an Islamic country, we cannot implement the Quranic law where it comes to criminal punishment. Hope that answers the question, brother. I am Maria Fresh, a religious sister, and I want to ask Mr. Ashok Shahani, why did you translate the book Raja into Marathi? At last, a simple question. Well, I translated it. One thing is because I like the book. Another thing was it was some kind of an atonement, because Taslima had the courage to write the kind of books she wrote. The minorities being put to trouble, a lot of suffering, torture in her own country, which is a Muslim majority country. Whereas almost the same, or maybe to a lesser degree, there may be some difference. The same things happened in the December and January riots in Bombay. But I found that no literary person here, I'm a Maharashtrian, no Marathi author has had the courage to say that it has put us all to shame. Taslima had that courage and she did it. Question to Dr. Zakir Naik. The fundamentalists of Bangladesh are themselves responsible for bringing Taslima Nasreen into the limelight
by announcing hefty prices on her head. If they had instead ignored her and allowed her to have her say, this issue would not have risen at all, and perhaps it would not have come here to discuss this subject. Brother asked a very good question, that if the so-called, in inverted commas, Muslim fundamentalists, so-called I say, if they would not have announced the price on our head, we would not have gathered here today. I agree with you. But you put the blame on the Muslim fundamentalists, I put the blame on the media. Difference of opinion. Even if an obscure organization like BSSP, Bangladesh Sahaba Sainik Parishad, who knew of it? No one. Even if the leader of that organization, Maulana Habibur Rahman, and I do know, brother, that somebody has called for a death sentence. If an obscure person, an insignificant organization, calls for a death sentence, why does the Indian media has to highlight it? Front page. Imagine front page news. According to the High Commission, this is I'm quoting from the Delhi newspaper, according to the High Commission of Bangladesh, he said that the amount of news that the Indian media has given to Taslima Nasreen is not even 1% of the news that's there in the Bangladesh newspaper. So, you ask me, are the Muslim fundamentalists to blame? You may blame them. I would say, even if they are to blame, or whether they are not, irrespective of that, I believe the journalists of India and the papers of India, they are much more wiser. So they should not have highlighted it, and neither would be here to discuss the matter. Yes, brother. The Indian media has highlighted this issue in order to save her life, because she's the only person. She's a woman and she's helpless in front of all these religious fanatics. So the Indian media is only trying to save her life. That's right. No, wait, please let me answer, brother, then you can continue the question. Brother, I said the Indian media tried to save from an obscure organization, insignificant Maulana Habibur Rahman. So today if you hear someone in the train saying, I'm going to kill the Prime Minister, you're going to give the headlines in your papers. No, it's a rhetoric question, brother. I don't want you to answer. Brother, please, brother, you have a right to ask a question later on. Let me complete my answer. So you said the Indian media. See, that's my opinion. My opinion can be wrong, brother. It's my opinion. I'm not saying my opinion has to be right. Some people in the audience may agree with my opinion, some people may not. So I feel that any insignificant person, suppose if maybe the call was given by the leading organization, then you have to think over it. I'm not commenting on the ban. I'm not commenting on the death call whether it's right or wrong. I'm saying, why did we have to give it headlines? Because for sensationalism. That's my opinion, brother. If you like it, you can take it. If you don't like it, you can refuse it. That's my opinion, brother. I add a correction. The call for the sentence to Taslima Nasreen is not that insignificant as he is trying to make out. The call has been given officially by the political party Jamaat-e-Islami in Bangladesh. I am Professor Hamza Virani. I would like to ask Brother Ashok Sahani that you said that these journalists, they have put life of Taslima Nasreen in problem. And he says that Indian media is trying to save the life of Taslima Nasreen. So first you say, as a journalist, I don't know whether you are a journalist or not. No, good. So some journalists, they have put the life of Taslima Nasreen in danger, and he says that journalists are trying to save the life of Taslima Nasreen. I want to know what is right. Whether they have put her in problem or they are trying to take out her from the problem. The problem is not that simple, of course. The problem is a bit complicated in the way, meaning the fundamentalists in Bangladesh had been itching for Taslima's head for a long time. Even earlier to the interview that she gave to Statesman.
And if you ask me my personal opinion, they might have been misled by a wrong idea of nationalism. Because Taslima, on her way back to Dhaka from Paris, stayed in Calcutta, and on the top of it said that Calcutta is my second home. You tell that to anybody from Shiv Sena in Bombay, for instance. If Imran comes to Bombay and says that Bombay is my second home, and the people in Pakistan are going to be bothered about it, or even if a person like Gavaskar goes to the cancer hospital function, then there's a lot of hue and cry in the newspapers about why should Gavaskar go, and this is all mixed up. That's what I say. It's a bit complicated, but all the same, since the statesman has not come out with an open apology, or open, unbarred, undeterred apology that they had been the cause, they had been made the cause for this demand, things would have been different. मेरा नाम रवि है, महानगर से आया हूँ। मुझे डॉक्टर व्यास से एक सवाल पूछना है। आपने कहा कि हिंदू धर्म में संवाद का बहुत महत्व है, मतलब जो लोग खुद को हिंदू समझते हैं उन्होंने संवाद करना जरूरी है अपोजिट विचारों के लोगों से। बाला साहब ठाकरे ने नामांतर के सवाल के ऊपर किसी भी दलित से सवाल नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के मसले पर किसी भी मुस्लिम लोगों से संवाद करने की कोशिश नहीं की। कोर्ट की तरफ से हो रही थी, वो भी उन लोगों ने नाकारी है। क्या आप लोग, आपकी दृष्टि में बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग हिंदू है? सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि इस लेटर दैट वी डिस्कस प्रिंसिपल्स एंड थियरीज देन वी डिस्कस पर्सन्स एंड इवेंट्स, क्योंकि फिर प्रश्न ही आ जाएगा। मैं हिंदू धर्मशास्त्रों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। संसार भर के सारे हिंदुओं के कार्यों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं अगर ये बताया गया हो, एक मिनट, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो कि जो आपके विरुद्ध विचार वाले हों या जो आपके विचारों को स्वीकार न करें, उन सबको आप मार डालिए या उनके अंगच्छेद कर दीजिए, उनको देश निकाला दे दीजिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं उल्लेख हो तो आप हमें बताइए, उस पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूँ। किन्होंने क्या किया व्यक्तिगत रूप से, कौन क्या कर, और खासकर आपने जो प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आज की भारत की राजनीति इस प्रकार की है कि मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। हालांकि किसी भारतीय नागरिक के लिए या संसार में किसी नागरिक के लिए राजनीति से एकदम दूर रहना बड़ा कठिन है। फिर भी एक बात भी मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वयं अपने आप से ही पूछ लीजिए, या ये इस प्रश्न का सबसे ज्यादा सही उत्तर लाल कृष्ण आडवाणी या बाल ठाकरे साहब ही दे सकते हैं कि सनातन वैदिक धर्म के हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वे अपने को हिंदू मानते हैं या नहीं। मैं कौन होता हूँ निर्णय देने वाला। हाँ, इतनी देर में चुप रहा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है अब तक मैं भ्रम में रहा। नाइक साहब ने जो कहा कि फतवा का केवल ओपिनियन होता है, ये आज मैंने जाना। अब तक हम लोग ये समझते थे कि फतवा माने किसी धर्माचार्य के द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कोई जो आदेश दिया जाए उसको फतवा कहते हैं, ऐसा मैं अब तक समझता था। हो सकता है मैं भूल में रहा हूँ। तो ये मेरी भूल हो सकती है, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विरुद्ध विचार वालों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। वहाँ जब संवाद की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष रखा जाता है। आप ये जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के समय तक शास्त्रार्थों की धूम मची रहती थी। दयानंद सरस्वती शायद प्रारंभिक सुधारकों में से, जिनको सुधारक लोग कहते हैं, धर्म में परिवर्तन करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें दयानंद सरस्वती प्रारंभिक लोगों में से थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के जीवन में और उनके
पश्चात भी लगभग 50 वर्षों तक सनातनियों में और आर्य समाजियों में स्थान स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में शास्त्रार्थ होते रहे, पुस्तकें छपती रहीं, सैकड़ों और हजारों पुस्तकें छपती रहीं। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के विचारों में एक दूसरे के विरोध होते हुए आज तक हजारों पुस्तकें छपी हुई हैं। ये संवाद के ही तो उदाहरण है। आज का कोई एक नेता अगर किसी के साथ संवाद बिना किए कोई काम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हिंदू धर्म शास्त्रों पर कैसे डाल सकते हैं? That can't be helped. That you can always escape that. आपने ऐसा बोला कि यहाँ के कर्मों का फल परलोक में मिलता है, तो आप जो सनातन जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कर्म किसको बोलेंगे? कर्म का क्या डेफिनेशन? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अन्यथा भी मैं ये चाह रहा था, खासकर साहनी साहब ने जो अपने भाषण में एक बात कही थी कि द प्रॉब्लम इज दैट एवरी रिलीजन हैज ए बुक and we can't believe in a book written before 100 years or 1000 years or crores of years. सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा निवेदन यह है कि you are at full liberty not to accept any religion and remain unreligious, but you have no authority or you have no liberty to say that we do believe a dharma and do not believe a dharma granth. इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम नास्तिक रहना या परलोक को न मानना, इसकी छूट सबको है। आज के जमाने में भी है, पहले के जमाने में भी थी। लेकिन आप ये कहें कि हम धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ में परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसके लिए आपको मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म का फल अगर परलोक में मिलता है, अगर मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलता है, उनकी ओर से ये प्रश्न है। अगर आप ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता, धर्म का फल ईश्वर नहीं देता, तो धर्म कौन सी चीज है जिसको आप मानना चाहते हैं? धर्म है क्या चीज? अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि कर्म किसे कहते हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रश्न हो सकता है, कुछ अन्य संप्रदायों में ऐसा हो कि आप 7-6 दिन कुछ भी करें, एक दिन किसी पूजा गृह में जाकर पूजा करने तो आप धार्मिक बने रह सकते हैं, कहीं ऐसा हो तो मैं नहीं जानता। हिंदू धर्म शास्त्रों का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे यहाँ प्रातः काल से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक 24 घंटे 12 महीने और जीवन भर शरीर, इंद्रिय, मन से जो कुछ चेष्टा, जो क्रिया हम करते हैं, वो सब करना है, और वो सब धर्मशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं किसी को किस दृष्टि से देख रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। अगर मैं अच्छी दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से देख रहा हूँ तो मैं पुण्य कर रहा हूँ। अगर मैं अपवित्र दृष्टि से किसी पर को देख रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, उसका भी फल मुझे मिलेगा। इसलिए कर्म को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में कभी नहीं बांध सकते। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सब के जो भी प्रयत्न हैं, ये सारे प्रयत्न कर्म हैं, और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता जिसका फल केवल यहाँ मिलकर रह जाए। हर कर्म का फल कुछ न कुछ यहाँ के बाद भी मिलता है। जिनको ईश्वर पर विश्वास न हो, जिनको परलोक पर विश्वास न हो, उनसे हम अलग बात कर सकते हैं। आज का मंच मैं समझता हूँ उसके लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर को नहीं मानते, उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। और तर्कों के आधार पर, शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप पुराण को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके लिए बुला सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए हमेशा यह प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है। हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट के लिए लेना चाहूंगा, मैं अकेले में, तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई न देखता हो। जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में, मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया। किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं फल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है, और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वो अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण नहीं, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहाँ रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो कीप पुलिस ऑन ए पुलिस?
आज सारी अव्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों को विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूँ या पुलिस को घूस खिलाकर बच सकता हूँ या अंत में न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूँ तो अपराध करने में कोई दोष नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं बच गए। अपराधों के बढ़ने का मूल कारण ये है, आप जितना अधिक सेकुलरिज्म का प्रचार करते जाएंगे उतना अधिक अपराध बढ़ता चला जाएगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंततः इन अपराधों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म पर हम ये ध्यान रखें कि ईश्वर भी उसे देख रहा है। मेरा सवाल डॉक्टर व्यास से है। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि धर्म के अंदर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए। और मैं अच्छा, आपने नहीं कहा। मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसी सनातन धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म भी कोई आने वाला है? अगर ये नहीं है तो ये सनातन धर्म में ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, और ये हिंदू वर्ड सनातन धर्म से किस तरह से रिलेटेड है, और वो कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, पहली बात ये है कि हिंदू शब्द आप जो समझ रहे हैं कि वो पारसियों के या पारस वालों के आने के बाद हिंदू शब्द हमारी जाति के लिए प्रचलित हुआ, वो थोड़ा आपका भ्रम है। कालिका पुराण आदि कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का पालिश और हिंदवो विंध्यमावेशन वहाँ स्पष्ट उल्लेख है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति आपको संस्कृत के पुराने कोशों में मिल जाती है। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक एक प्रथा रही है, शब्द किसी का पहला शब्द और अंतिम शब्द, पहला अक्षर अंतिम अक्षर मिलाकर पूरा शब्द बन जाता है। आज भी ये प्रथा अन्य भाषाओं, डॉक्टर में DR लिख देते हैं, डॉक्टर का पहला अक्षर D, अंतिम अक्षर R, DR का मतलब डॉक्टर, MR का मतलब मिस्टर। वैसे हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत का जो देश है वो हिंदू देश है, इसलिए हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, ऐसा उल्लेख पुराणों में और उसके कुछ प्राचीन साहित्य में मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो सिंधु विदेशी जब यहाँ आए तो उनको सिंधु नदी सबसे पहले मिली, सिंधु के आधार पर सिंधुस्तान बना, और सकार का उच्चारण हकार करने की कई भाषाओं में प्रवृत्ति है। इसलिए जैसे सप्ताह का हफ्ता, सरस्वती का हरहवती, वैसे इस आधार पर भी सिंधु का हिंदू बनकर सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो मूल शास्त्रों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले हम नहीं है। इतना ही मैंने कहा है। I'd like to make a comment. Very briefly. Regarding the question said by the brother to Dr. Vyas, we have given a correct definition of the word Hindu, and he said that Hindu is a person living in India, in Hindustan. But that's a geographical definition. By that, if you agree with that definition, even I am a Hindu. But what brother was referring to is the theological definition of Hinduism mentioned in the Hindu scriptures, which I, being a student of comparative religion, I don't come across any. This definition has also been agreed by Swami Vivekananda, that Hindu is a geographical definition, meaning those people living on this side of the Indus Valley civilization. By that I am a Hindu. But the religion should be called a Vedantist religion, those who follow the Vedas. And one more clarification regarding, you said that I had mentioned that fatwa is opinion. Yes, I did mention it. But if that opinion is given by the judge sitting on the seat of judgment, it is taken as a judgment and a verdict. So fatwa can also mean a verdict. Let me clarify. And Quran clearly states in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 59, that if you are in doubt, ask the person who knows. So if the Quran speaks about medicine, and if you have a doubt, you will take fatwa from a doctor. I have a right to give fatwa when Quran is talking about medicine. I have a right. I have a right to opinion. But if it's talking about fiqh and masail, I can give fatwa, but it will have no value. You'll have to go to a faqih. In the same way, if the fatwa is given by a judge sitting on the judgment seat, it is taken for verdict. But given by a layman, it is just a layman's opinion.
sister has asked a similar question. She said, we have talked enough of Taslima Nasreen Zajja. Now we're going to talk on the satanic verses, which I can give a lecture on that, which I don't intend doing. Regarding the verdict, again it comes to the same thing as I mentioned earlier, the verdict does not change. Same. But if you want me to throw some light on the satanic verses, I do agree that Salman Rushdie has abused our beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him. He has abused his wife, etc., who are the al-Mu'mineen, the mothers of all the Muslims. He has. But what I fail to realize, that why hasn't some scholar thrown some light on what else has written on that book, which I will give my opinion. Why I'm giving the opinion? Because I have read that book, Satanic Verses. I have read that. If you want to read, you can go to London or America. There's a copy freely available. I had been to London and America. Just giving a gist on what Salman Rushdie, besides he abusing the Muslim characters, he has even abused his protectors. The London people, the British government who have protected them, he has abused them. On the very first page, or you could say the first page of the first chapter, actually it's page number 3, he has abused the Londoners. He says, London Bhai, the first page of first chapter, that's page number 3. London Bhai, and he abuses. I can't use that word, believe me, I can't use that word. I tried to use that word when I'm having a dialogue or debate with a priest.